All right. Good evening, everyone. I am Dr. Priyam Sharma. I am by profession a pediatrician, that is a child specialist, and also a homeopathic physician. You can find me on Facebook by Dr. Priyam Sharma, on Instagram by Your Homeopathic Pediatrician, and you can locate me physically at Andheri West near Andheri Sports Complex. I'm also the founder and owner of Revolve, which is a digital platform for consultation. If you cannot reach me in the physical world. So I'm your 24/7 doctor, available both digitally and physically in order to help you and your child with all their complaints and ailments. And today I'm here live with BabyChakra to talk to you about something which is very, very commonly a point of concern for many, many mothers, and that is weaning. तो वीनिंग क्या होता है? वीनिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका बच्चा जो अब तक कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड या टॉप फीड्स या मिल्क पर था, नाउ विल स्टार्ट टेकिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली विल स्टार्ट टेकिंग सॉलिड फूड्स. अब सॉलिड फूड से मेरा मतलब क्या है, और हाउ डू वी बिगिन वीनिंग? बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट वीनिंग किस एज पर शुरू करनी चाहिए. जो कॉमनली एक सवाल होता है कि मैं अपने बच्चे का दूध कब बंद करूं, कितनी उम्र तक उनको ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं. आप अपने बच्चे को 4 to 6 months तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करिए. अकॉर्डिंग टू द इंडियन एसोसिएशन एंड द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये बोला जाता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग up to 6 months. Post that, you can start weaning the child slowly. Now, if your child is premature, it is 100% necessary कि आप 6 महीने तक कम से कम उनको breast feeding दे या you keep them on milk. However, if your child is not premature, between 4 to 6 months, depending upon आप कितने ready हैं और आपका baby कितना ready है, you can start gradually weaning the child of just purely milk. अब आप मुझे पूछेंगे कि 6 महीने क्यों या 4 महीने क्यों, उसके पहले क्यों नहीं? That is because your child is not ready before that to accept solid foods. आपका बच्चा च्यू नहीं कर पाएगा, आपके बच्चे को swallowing में डिफिकल्टी हो सकती है, उनका जो इंटेस्टाइन है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है टू एक्सेप्ट सॉलिड फूड्स. एंड अप टू द एज ऑफ 6 months उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, वो सब कुछ उनको प्योरली ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है. इनफैक्ट उसके अलावा उनको ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडीज भी मिलते हैं जो उनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है उसमें हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. इसलिए इनिशियली आपको उनको सॉलिड फूड्स देने की जरूरत नहीं है. However, 6 महीने के बाद जो है breast milk is not sufficient for all the nutrients that your child requires. That means especially iron. आयरन जो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको ब्रेस्ट मिल्क से या टॉप फीड से या मिल्क से नहीं मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 6 months. एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट गिविंग द चाइल्ड सॉलिड फूड्स. अब वीनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मदर लेड वीनिंग और एक होता है बेबी लेड वीनिंग. अब मदर लेड वीनिंग यानी कि क्या, अगर मैं एक माँ हूँ तो मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो बैठ रहा है या वो मुंह में चीज़ें डाल रहा है या अब 6 महीने का हो गया या अब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है या आई हैव टू गो टू ऑफिस तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती, तो आई हैव टू स्लोली ग्रेजुअली पुट द चाइल्ड इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग सॉलिड फूड्स. तो मैं क्या करूँगी, आई स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग प्यूरेज ऑफ ईदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या मैं सूप इंट्रोड्यूस करूँगी एंड आई ग्रेजुअली 1 feed at a time wean off the kid. अब दूसरा प्रकार जो होता है उसे हम बोलते हैं बेबी लेड वीनिंग, विच इज समथिंग दैट वी recommend a lot nowadays for the simple reason that उसके बहुत फायदे हैं. तो पहले हम जानते हैं बेबी लेड वीनिंग यानी क्या होता है. बेबी लेड वीनिंग का मतलब है आपका बच्चा जो है वो खुद से आपको इशारे देगा कि उसे अब
ब्रेस्ट मिल्क या सिर्फ मिल्क की जरूरत नहीं है, ही और शी नीड सॉलिड फूड नाउ. So ये क्या, what are the signs that you will see? So you might see your child grasping at your food, या कोई भी चीज मुंह में डाल रहा है, या बहुत frequently your child is asking for feeds. उसका पेट सिर्फ दूध से जितना हम पहले देते थे उससे नहीं भर रहा है, या आप कुछ खाने जा रहे हैं और आपका बच्चा मुंह खोल रहा है. All these are signs that your child is ready to wean off. और इसमें बेबी लेड वीनिंग में हम क्या करते हैं, हम प्योरेज नहीं बनाते हैं. हम कोई भी चीज के छोटे छोटे क्यूब्स काट कर या उसको बॉईल कर कर बिना मैश किए वी कीप इट इन फ्रंट ऑफ द बेबी, और बच्चा जो है उसको खुद हाथ से उठाकर अपने मुंह में डालेगा. नाउ इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपके बच्चे को खाने का टेस्ट, कलर, टेक्सचर, छूने में कैसा है, पूरा खाना जो है वो मुंह में डालने पर कैसा है वो पता चलेगा. दूसरी चीज ये है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंप्रूव होगा इससे आपके बच्चे का. तीसरी चीज है, इससे आपके बच्चे को च्यू करने की आदत पड़ेगी. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को अगर प्यूरीज दिए तो आगे चलकर जो है उनको चबाने में तकलीफ होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैड अ पेशेंट who was on purees of dal and chawal up to the age of 8 years because chew करने की आदत ही नहीं पड़ी थी बचपन से. तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. ऑल्सो इसमें आपके बच्चे की डेक्सटेरिटी जो है, यानी कि मूवमेंट्स जो है वो बढ़ती है, एंड द चाइल्ड गेट्स a choice, develops a mind of his or her own, whereby he or she can select the foods that you are presenting to him, and appreciate the natural taste of foods. Now, whether or not you select baby led weaning or you select mother led weaning, irrespective of that, एक चीज जो है हमको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि आप जो भी बच्चे को खाना देंगे, उस खाने में ऊपर से शक्कर या नमक या कोई भी मसाला इनिशियली डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स हमने ये देखा है कि हम फ्रूट प्योरेज देते हैं या हम घसा हुआ फ्रूट देते हैं, उसमें थोड़ा सा हनी या शक्कर या गुड़ डाल देते हैं, या बच्चे को शक्कर या गुड़ का पानी पिलाना चालू करते हैं या हनी का पानी पिलाना चालू करते हैं वीनिंग के लिए. ब्रेस्ट मिल्क अगर आप नेचुरली टेस्ट करेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क डजंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ स्वीटनेस, इट इज माइल्डली स्वीट. सिमिलरली आपके जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें उनका खुद का नेचुरल टेस्ट और स्वीटनेस रहता है. उसमें ऊपर से शक्कर या गुड़ या हनी डालकर हम अपने बच्चों का जो पैलेट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी कि बच्चा फिर सिर्फ मीठा खाने का आदी हो जाएगा, उसको और कुछ खाने का मन नहीं होगा, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू फूड्स. देयरफॉर जो भी नेचुरल टेस्ट है खाने का, अगर वो आप खाने की आदत आपके बच्चे को लगाएं तो इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट लेटर ऑन टू help your child try newer types of foods. अब इनिशियली जब आप वीनिंग शुरू करें, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विथ रिप्लेसिंग वन फीड. यूजुअली हम बोलते हैं उनका दोपहर के टाइम का या मिड डे का जो फीड होता है उसको आप रिप्लेस कर दें विथ any solid food item, and you can start with either fruits or vegetables, but make sure that you start with a single ingredient. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने दाल चावल मिक्स करके उसको उबाल कर उसका पानी दे दिया या बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दिए उसका सूप दे दिया. You have to make sure that your child appreciates one single food item before गोइंग टू मल्टीपल टेस्ट. उनका टेस्ट बड्स जो है उसे डेवलप होने दीजिए, उसे कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है. एंड इट ऑल्सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस सिंगल थिंग्स एट अ टाइम, it makes it easier for the baby to digest it, and it makes it easier for the baby to even accept it. So you can start with any fruit, probably an apple or a pear, or you can start with any of the vegetables. It could be watery vegetables like lauki or cucumber, or you can start with peas or carrot, and then gradually every week give your child at least 7 days to accept a food item. If your child is accepting it faster, nothing like it, आप थोड़ा जल्दी introduce कर सकते हैं, but give the child at least 7 days to introduce and appreciate a new food item before introducing the next food item. By the time your child is about 10 to 12 months of age, your child should be having 3 solid meals in a day.
एटलीस्ट 3 सॉलिड मील्स इन अ डे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 बार या 2 बार दूध दे सकते हैं। एंड बाय द टाइम योर चाइल्ड इज अबाउट 18 months, that is about 1.5 years of age, your child should be having at least 3 solid meals plus 1 solid snack in a day, and make sure that आप जो भी खाना दे रहे हैं वो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। गाय का दूध या काउज मिल्क, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि गाय का दूध दें या भैंस का दूध दें, अगर दें तो कितने टाइम पे दें। पहले चेक करिए कि आपके बच्चे को इस प्रकार के दूध से कोई एलर्जी तो नहीं है, यानी कि उसे बहुत छोटी मात्रा में दीजिए। देखिए आपका बच्चा उसके लिए कैसे रिएक्ट करता है और फिर डिसाइड कीजिए कि वो देना चाहिए या नहीं। अगर आपकी फैमिली में एलर्जीज की हिस्ट्री है, देन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट, please go to your pediatrician, contact your pediatrician, and under the supervision of your pediatrician, introduce anything of this sort. Anything that is allergic in nature or is a known allergen in your family or in your genetics, उसे under the supervision of your pediatrician ही चालू करना है। और by the age, after the age of 1 year, we say it is sufficiently safe to try and introduce cow's milk or buffalo's milk if it is necessary. If it is not necessary, then it is 100% not compulsory that you give your child some form of milk. There are other sources of calcium which are available, and if your child is not tolerating milk, it is still fine, and we can still go ahead with different sources of calcium which can be helpful for your child. अब ये हो गई वीनिंग के बारे में सारी बातें। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल दी टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू वीनिंग, द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। मेक श्योर कि जब आपका बच्चा बैठ पाए, can hold his or her neck, is showing some kind of chewing reflexes, is trying to grasp at objects, is when you start thinking about weaning. उसके पहले प्लीज अपने बच्चे के मुंह में कुछ भी जबरदस्ती मत डालिए। They might throw it out, it might discourage you, it might cause trouble to the child, it might cause gagging या अटकने लगेगा खाना। So you make sure that that is how you decide when to wean. Now this is the basics of weaning that we have spoken about, और अब हम आपके questions लेंगे. Let's talk about the things that you all have doubts about so that we can answer them for you and sort it out. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है मीनाक्षी शर्मा की ओर से, जो बोल रही हैं कि मुझे अपने बच्चे का दूध छुड़वाना है, प्लीज हेल्प मी आउट। मीनाक्षी, आई होप दैट आपका बच्चा ऑलमोस्ट 6 महीने का हो चुका है, और अगर आपको अपने बच्चे का दूध छुड़वाना है तो द सिंपलेस्ट वे टू डू इट इज, आप कोई भी एक टाइम, अगर आप अपने बच्चे को दिन में 4 टाइम दूध दे रहे हैं या 3 टाइम दूध दे रहे हैं या 5 टाइम दूध दे रहे हैं, आप उसमें से कोई भी एक टाइम जो है आप अपने बच्चे को कोई भी एक सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस करिए। द कॉमनेस्ट वन दैट यू कैन इंट्रोड्यूस द चाइल्ड विथ इज अ फ्रूट लाइक एप्पल और पेयर, और या फिर आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं लाइक पीज और गाजर, उसे बहुत छोटा छोटा काटिए या उबाल लीजिए, या उसको किस के हल्का सा पानी में उबाल लीजिए, ऊपर से कुछ भी मत डालिए, और धीरे धीरे आपके बच्चे को वो देना शुरू कीजिए। इनिशियली हो सकता है कि आपका बच्चा उसको मुंह से निकाल दे या ढकेल दे या बिल्कुल भी नहीं ले, पर ग्रेजुअली स्लोली आपके बच्चे को जो है उसकी आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेवती, वो है दुर्गा सालवी की ओर से, नो, रेवती राजामणि की ओर से। ये क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने पूछा है कि किस एज तक बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। आप अपने बच्चे को तब तक ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं जब तक आपके लिए और आपके बच्चे के लिए कन्वीनियंट हो, बट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर आपके बच्चे को कम से कम 4 से 6 महीने की उम्र तक रखना चाहिए। 6 months इज द आइडियल एज, जब तक आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रखिए। उसके बाद आप धीरे धीरे उसे स्लोली कम कर एंड यू कैन
give him or her solid foods. In terms of continuing breastfeeding, you can continue up to 1.5 years as well, but along with adequate amounts of solid food. Make sure that आपके बच्चे को सिर्फ निपल की हैबिट है, इसके लिए आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सोने के टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. If your baby is having 3 solid meals in a day and 1 solid snack in a day, you can conveniently pull the child off breastfeeding. Okay, then there is a question by someone who asks, is baby-led weaning bad? No, baby-led weaning is not bad. In fact, it is a lot more beneficial to both the child and the mother. And I think we have discussed a lot about baby-led weaning during the lecture. So if you've attended the lecture, you should get your answer from there. Pooja Malviya पूछ रही हैं, how do I start baby-led weaning at 6 months? Okay, Pooja, the moment you ask how do I start is the moment that baby-led weaning goes wrong. Okay, it's your baby who will go give you indications that he or she wants to start weaning. And when you get those indications, like I have mentioned in the past, that the indications will be grasping at food in your hand, or opening his or her mouth, or asking for more and more breast feeds or top feeds, and not being satiated with the food, the breast milk that you are giving, or grasping at things and toys and putting in the mouth, or just randomly whenever you make him or her sit to feed, playing with the breast and not nursing properly. When you see these signs, and when you see that your child is sitting and holding his or her neck, is capable of chewing, is pushing back things when you are giving it to him or her, that's the sign that you can begin weaning. And बेबी लेड वीनिंग जो है, आप छोटे छोटे क्यूब्स या होल फूड्स जो है अपने बच्चे को दीजिए, या किस कर. डोंट मेक प्यूरीज, डोंट मेक मैशेस. हल्का फुल्का किस कर, लेट इट हैव अ लिटिल बिट ऑफ टेक्सचर, और मेक क्यूब्स, और होल पीस जो है उसको आप हल्का सा हाथ में मैश कर उसको रख दीजिए आपके बच्चे के सामने. द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली पिक इट अप एंड स्टार्ट पुटिंग इट इन हिज और हर माउथ एंड टेक इन एज मच एज ही और शी वांट्स. ओके जेनी, मुझे भी अपने बच्चे का दूध छुड़ाना है. वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन. होप आपको उसका जवाब मिल गया होगा. देन वी हैव कविता सहानी. शी इज आस्क्ड, हाउ डू यू कट अ बनाना फॉर बेबी लेड weaning? Okay, if you're starting your child on something, I would suggest please to not start on a banana. However, if you are if you're midway and you want to introduce banana, you can cut it into pieces which can be held by your kid without getting mashed completely or without slipping off. So I would say about quarters would be good, 4 quarters. उस उतना जितना वो अपने हाथ से उठाकर अपने मुंह में डाल पाए, and it is easy for him or her to swallow it. So 4 quarters would be a good idea to do. Easy to pick up for your child, easy to grasp, and easy to put in your mouth, his or her mouth, and swallow without it causing any kind of gagging. What age can you start baby-led weaning, Bhavna? I think I've already answered that question. Then we have Varsha, and we have someone who's asking, can I give my 6-month-old a scrambled egg? If you're just starting your child, I would suggest anything which is a known allergen like eggs or meat, or anything which is very high on protein. उससे शुरू मत करिए. Gradually you can introduce an egg. You can introduce egg and meat up to the age of 7.5, 8 months. It would be very, very convenient, very, very healthy for your child. In fact, it will help in growth and development. But should you start out at 6 months with scrambled eggs? No, I wouldn't recommend that, for the simple reason that eggs are known allergens, and अगर आपके बच्चे को उससे एलर्जी हुई तो उससे बहुत तकलीफ हो सकती है. So anything which is high on protein, a little later on, after introducing a couple of things. Apurva पूछ रही हैं, how many times a day should I feed solids to my 6-month-old? Start by replacing one single feed. आपका जितना भी टाइम आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उसमें से एक सिंगल फीड को आप रिप्लेस करिए सॉलिड फूड से, एंड एवरी वीक you can introduce another feed.
Now, what should I drop first when feeding? Varsha is asking me, what should I drop first when feeding? Okay, I'm sorry, Varsha, I do not understand that question. If you're still here and listening to me, can you frame that question better for us so that I can answer it for you? Then there is Vandana who's asking, how do I stop night feeding? ओके, आपका बच्चा कितना बड़ा है उस पर डिपेंड होता है. सेकेंड थिंग, इफ योर चाइल्ड इज बिग इनफ, से 1.5 2 years of old and is still taking night feeds, then we have certain aids which help in pulling the child off the nipple. Some of these include methods like using certain bitter things to apply on the nipple so that the child stops taking to the nipple या nipple के लिए जिद करना बंद कर दे. But if you are talking exclusively about night feeds, I would, and your child is really small, say about 6 months or 8 months or so, I would say just wait it out a little bit more. थोड़ा और time दीजिए आपके बच्चे को, and gradually you can probably replace the night feed with a good amount of food before the night feed time, so the child is not hungry and is not stubborn or obstinate about taking a night feed. It will be a gradual process. It will not be easy if your child is used to it, but it is a slowly you can get about it. राधिका बोल रही है यूजफुल मैम, अगर आप रिटन में भी कुछ दो तो ओके. All right. So we will try and make a post about weaning and BabyChakra app पर डालेंगे so that you can go and you can refer to it whenever it is required. We have about 8 minutes or so more. If we have any more questions that are coming our way, then it would be great. If we do not have any questions, I would like to introduce myself for the people who have joined in late probably. I am Dr. Priyam Sharma. I am a pediatrician, that is a child specialist, and I am also practice homeopathy. I'm a homeopathic physician, and you can find me on Facebook at Dr. Priyam R. Sharma. You can find me on Instagram at your homeopathic pediatrician, and you can also find me on my website, which is www.prevolve.in. Prevolve is my baby. Like you all have babies, you all are mothers here. Prevolve is my baby. It's my brainchild. It's a platform where you can reach me digitally or in the physical world, and you can always consult me there. You can also find me physically at Andheri West, near Andheri Sports Complex, at the polyclinic called Star Diagnostics. So that's for me, from me, and I hope this was helpful.